everyone for the time being. Sugandha, you are muted. Yeah, I was also muted. The thing I said for the others worked for me as well. I welcome you all. I'm very happy to see you in numbers. I see so many students gathered here for this event. And despite the fact that rain has held us from most of the activities that we do in routine, I hope you're going to have wonderful 2 hours here. You're going to have this enriching experience here. And so without any further delay, I announce this event open wholeheartedly. And before we go ahead, just few points that I would like you to take note of. I want everybody to write name and their school name in the chat box so that we have a record. In case you are part of the school, one representative from each school suffices for us. Just let us know your name and name of school. Please stay muted throughout any conversation that you want to make. Please write down in chat box. We'll try our best to get back to any query or any doubt that you have. And also to let you know if some of your friends are not able to join via Zoom for whatsoever reason, via YouTube also, you can enjoy the whole event and also participate in the quiz to come. So going further, as you know that this event is being conducted by INYAS. So I would like to invite Dr. Rajendra Dhaka, who is professor in physics department at IIT Delhi. He is chair INYAS and everything is being worked under him. So I request him to say a few words. Over to you, Dr. Dhaka. Thank you, Sugandha. Can you hear me? Good morning, everyone. On behalf of INYAS, let me also welcome all of you. It's my great pleasure to welcome our guest of honor in today's event, Professor Sudha Bhattacharya, who is INSA Senior Scientist at Ashoka University, and Professor Gagandeep Kang from CMC Vellore. I thank you for accepting our invitation to grace this very important session of INYAS on this flagship event of WiSDom. I also welcome all my INYAS colleagues and especially thank coordinators and speakers of this event. Let me also welcome all participants, particularly all young students from various schools. As Sugandha said that despite having heavy rain, I see that many of the students have joined either from schools or from their individual laptops to this event through Zoom as well as through our INYAS YouTube channel, where we are live streaming this event for the benefit of all students. I am also happy to welcome participants from National Young Academies of neighboring countries, where we also invited participants from these countries. As you know, this event is part of the flagship program of INYAS named WiSDom, Women in Scientific Domain. And of course, my colleagues will talk more about this specific event. As there are participants and particularly young students from various places across India, men from different schools. So let me also tell them about INYAS and our mandate and what we do under INYAS platform. So INYAS is actually Indian National Young Academy of Science, which was founded by Indian National Science Academy, INSA, during 2014-2015. And currently the only recognized academy for young scientists in India. In INYAS, we are now a family of around 105 current members and around 65 alumni members. All are young independent researchers from all over India and from different institutes like IITs, IJARs, Central State Universities, research institutes of CSIR, DAE, DRDO, and from all different disciplines of science, engineering, medicine, agriculture, and so on. So this is for the information and for motivation to all young students from all schools.
We of course have members from science communication, science policy, and science education. As you know, these are the three verticals very important to communicate and to form policies for science. In recent time, we are also considering members from industry. As you students will learn and they will get motivation by having members or the collaboration from industry and academia for the sustainable development in our country. This membership for this organization is only for 5 years. So every year we are inducting around 20-25 new members, and around the same number become alumni every year. So this way the academy will always have a group of young and dynamic scientists in the organization. In INYAS, our vision is to promote science education and outreach, networking and support for young scientists, as well as we build scientific temperament across the country. We organize many science outreach activities. This event is also one of them, like science camp at school level, awareness workshops, skill development and competition events for various levels, covering from college students, school students, PhD students, as well as postdocs. We also conduct survey on different scientific issues that are faced by young researchers in India. We then do some analysis, write a report and try to publish them as white paper. And also we communicate to the different policy makers for a positive change. We of course conduct various conferences and technical symposia for interdisciplinary research collaboration. As you know, for young students, this is important component for future collaborative research for the future growth of the country. To better connect with the school students from a remote area, from the rural area schools, we also conduct events in local languages. We also conduct scientific awareness programs, rural area teachers training program, programs for farmers in agriculture science, and many more. We also collaborate with other academies and organizations for various outreach activities. So considering all these, INYAS is providing all of us a great platform to learn from each other, work with each other, and more importantly, to contribute back to the society in different ways. So of course, we have taken many new initiatives. One of them is focusing on rural science education training utility program, mainly focusing on rural area school students and teachers to motivate them for higher education in science, for skill enhancement workshops, for better teaching abilities for teachers, and so on. We also focus and conduct events for PhD students where we make them aware about what are the post-PhD opportunities in future. Also, we invite researchers, eminent speakers to tell the success stories to motivate students for higher education and in science particularly. So in these directions, one of the focuses on women in scientific domain. So this is the flagship event called WiSDom, under which this event is being organized. And in this series, we have concluded one offline event in the last week only at IIT Gandhinagar. That event was mainly for young independent researchers. And the event today, which is going now, is mainly for young students from various schools and colleges. So you, of course, some of the students may have this point in the mind that why we are conducting this event. Particularly, this is very important, as we also know that there are very few women researchers, particularly at the level of faculty position in India. And through these flagship events, our main aim is to motivate young students for higher studies and make them aware about various job opportunities in the field of science, technology, engineering, and mathematics. And you can see that in today's event, we have two eminent speakers, and also we plan to discuss the achievements and success stories, the scientific journey of two great women scientists, Anandibai Gopal Rao Joshi, the first Indian female doctor
of Western medicine, and Kalpana Chawla, who was the first woman of Indian origin to fly to space. So my INYAS colleagues Nisad and Neha will be talking more in detail. Through these events, we aim to inculcate scientific temperament among the young students and motivate them to continue their career in STEM. I request all school students, the participating students, to have active interaction with all the speakers and take part in the competition. As Sugandha mentioned, we are also conducting a quiz. And I am very confident that all young students will be greatly benefited from this event. And we hope that through this flagship event of INYAS, we will be able to contribute and help young scholars, young students to do science. And in fact, I can give you one example. In the last week's event, we were discussing about the leadership. And there was a point from one student that why there are no women directors in IITs. I am from one of the IITs. And today morning, we had a great news that the IIT Madras campus in somewhere outside, a woman researcher will be leading that IIT campus in Tanzania. And that is a great news, and a great effort towards this initiative. So with this, I would not take much time. I have already taken. I wish for a great success for this program. Thank you all for joining. Over to you, Sugandha. Thank you. Thank you, Rajendra, for briefing about INYAS activities. The activities are a little too many that you have to take some time. And a message out there for everybody who has joined. INYAS membership call is now open. So in case you are eligible for that, please apply. Or if you know somebody who's eligible for that, please let them know. And now that you are aware of INYAS, the school students, the school administration, if you want some events to be conducted, please reach out to us. We'll connect you to some INYAS member to conduct some activities for you in the stated direction. We'll be happy to do that. So going ahead in the event, I would like to request Dr. Rishamjeet, INYAS member, to brief us about the event, and then we get going. Over to you, Rishamjeet. Thank you so much, Dr. Sugandha. Ananya, maybe you can put it in the slideshow. Yeah, thank you so much. So thank you so much, Dr. Rajendra, for beautifully describing the INYAS activities and also explaining a bit about the WiSDom event. So just to reiterate a few things, WiSDom, which is Women in Scientific Domain, we actually conduct this event to celebrate and honor the remarkable contributions of women who have excelled in science, who have pushed boundaries and left an important mark on the world of knowledge. So we know throughout history, women, they have led groundbreaking studies, unraveled mysteries of natural world, and they have shaped the world we live in today. So this event is to honor, is to celebrate the achievements, not just the achievements, I'll say, but also their resilience, their tenacity, their unwavering commitment to science. So under this event, as we already mentioned, maybe next slide, Ananya. We conduct a couple of different events. For example, the one is the Trailblazer. These three events, they were done last year in 2022. So in the Trailblazer events, the women, they share about, mostly the INYAS, female INYAS members, they share about their journey, their challenges, and try to encourage the young students, the college students in their journey and understanding their journey towards science. Then there is Iconic Women Scientist of India. Similarly, we are conducting it today. We also did it last year. Then there is also another workshop, which is for women in scientific domain. Then maybe next slide, Ananya. And yes, so this year a workshop was conducted, which was an offline workshop conducted at IIT Gandhinagar. There we had a lot of speakers on board, and many female participants, many female who have come from the different domains of science and leadership position, administrative position. They shared their journey. They shared what could be the further possible opportunities, the fellowships which are available for them. So similarly, today we have gathered today for women. Ananya, maybe you can go to the next slide.
So today we have gathered for the iconic women scientist. So we have two talks by Dr. Neha Sardana and Dr. Nishad. Then we also have talk by Professor Sudha Bhattacharya. There will be a message by Dr. Gagandeep Kang. And as we have already said, there will be a quiz competition. The link of the quiz competition we will be sharing in the chat itself at the time when we will conduct it. And we will be announcing the results thereafter. So with this, I'll stop and I'll say, let us begin the journey. Let us begin the celebration of wisdom today. So thank you so much. So now I call Dr. Shobna. Yeah, over to you, Dr. Shobna. Thank you, Dr. Kaur. Very nice introduction about wisdom. Without any further delay, it is our honor to welcome our guest of honor, Dr. Sudha Bhattacharya. She is an INSA senior scientist at Ashoka University, and she is globally acclaimed for her work on Entamoeba histolica, which actually marked the beginning of molecular parasitology in Indian research. She did her primary education in New Delhi, followed by PhD from Indian Agricultural Research Institute. Then she went and had a couple of postdocs from very renowned places like Stanford University, Boston Medical Biomedical Research Institute, and NIH, National Institute of Health, prior to joining JNU. She has a lot of awards to her name. Just to name a few, she is a fellow at the Indian National Academy of Sciences, Indian Academy of Sciences, and Indian National Science Academy. With this, I invite Dr. Sudha Bhattacharya to please share her insights and motivate us along with our young Indian generation. Thank you. Thank you very much, Shobna, and congratulations to INYAS for this organizing this series of events. So as Shobna told me, I should speak more in Hindi because we have school children from various parts. तो मैं हिंदी में और इंग्लिश में मिक्स करके बोलूँगी, और क्योंकि स्कूल के बच्चे हैं तो मैं अपनी स्कूल से जर्नी शुरू करूँगी कि मैंने कैसे साइंस की तरफ मेरा झुकाव हुआ. तो थोड़ा सा अपने बैकग्राउंड का बताती हूँ कि मेरे जो पेरेंट्स थे वो अब जो पाकिस्तान है वहाँ से वो माइग्रेट करके दिल्ली में आए थे, तो एज रेफ्यूजीज बेसिकली. तो ऑब्वियसली पैसे की तो शॉर्टेज थी उनके पास, पर उनका ये था बहुत ज़्यादा कि बच्चों को अच्छी पढ़ाई करवानी है, बच्चों की शिक्षा में खर्च करना है. तो मुझे सबसे पहले वो अपॉर्चुनिटी मिली कि अच्छे स्कूलों में मुझे पढ़ने का मौका मिला. और आई थिंक अगर कोई भी लड़की को वो मौका मिलता है तो पहला उसका जो बैटल है वो ऑलरेडी वो जीत चुकी होती है. तो मुझे वो मौका मिला और मेरा नेचुरल जो झुकाव था वो साइंस की तरफ ही था. मुझे साइंस, मैथ्स और क्रिएटिव राइटिंग मेरे फेवरेट सब्जेक्ट थे स्कूल में. तो ज़्यादा मेहनत के बिना भी मुझे मार्क्स अच्छे मिल जाते थे और मैं साइंस और मैथ्स में मुझे बहुत मज़ा भी आता था करने में. तो स्कूल में मेरा ये था कि ठीक है मुझे साइंस पढ़नी है, पर उस ज़माने में जो था, आजकल भी वो अभी कम नहीं हुआ है, पर मोस्टली ये था कि लड़कियों को तो पढ़ाई लिखाई करो, अच्छे से पढ़ो, पर उसके बाद शादी करना है और घर चलाना है. और अगर तुम एजुकेटेड हो तो तुमको बच्चों को अच्छे से तुम पढ़ा सकोगे, बस उतना ही तुम्हारा रोल होगा सोसाइटी में. तो जब मैं स्कूल में थी मैं साइंस पढ़ रही थी, मैथ्स पढ़ रही थी, बहुत अच्छा लग रहा था, पर कभी ऐसा सोचा नहीं था कि मैं साइंटिस्ट बनूंगी. उसका कारण एक ये भी है कि हमारे पास कोई रोल मॉडल तो थे ही नहीं साइंटिस्ट के. तो मैं डॉक्टर बनने का सोच सकती थी, इंजीनियर बनने का सोच सकती थी, पर साइंटिस्ट होता क्या है यही तो हमने कभी देखा भी नहीं था. और लगता था कि साइंटिस्ट लोग होते हैं जो बहुत पागल से जीनियस होते हैं, ऐसे कॉमन लोग तो साइंटिस्ट नहीं बन सकते, पर हाँ हम साइंस पढ़ सकते हैं, हम साइंस को समझ सकते हैं. तो दिमाग में कभी नहीं आया था कि साइंटिस्ट बनूंगी. तो आई थिंक पहला पॉइंट मेरा जो आया जब मैंने अपने को सीरियसली लिया, और वो मैं ये स्कूल के बच्चों को बताना चाहूँगी कि अपने को सीरियसली लेना बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, जो हम हमेशा करते नहीं हैं. मैंने भी अपने को कभी सीरियसली नहीं लिया था स्कूल में, क्योंकि मुझे था कि ठीक है मैं अच्छे मार्क्स ले रही हूँ, अच्छा पढ़ रही हूँ, उसके बाद तो शादी ही सब लोग करते हैं, तो मुझे क्या डिफरेंट करना है.
पर जब मेरा हायर सेकेंडरी का बोर्ड एग्जाम सीबीएसई का जब हुआ, उसमें मेरा जो रिजल्ट आया वो मेरे लिए भी बहुत अनएक्सपेक्टेड था। तो मैंने मतलब जो मेरिट लिस्ट होता है, जो टॉप 20 स्टूडेंट्स का, उसमें मेरा नाम था। तो मुझे लगा ओ माय गॉड, मैं टॉप 20 स्टूडेंट्स में मैं हूँ, दैट मीन्स आई कैन रियली डू मच मोर। तो व्हाट एम आई डूइंग? तो आई थिंक दैट वाज द फर्स्ट टाइम आई टुक माई सेल्फ सीरियसली, यू नो देयर इज मच मोर पोटेंशियल इन मी देन व्हाट आई एम इवन थिंकिंग ऑफ माई सेल्फ। एंड आई थिंक वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम अपने पोटेंशियल को रिकग्नाइज करें। तो आई थिंक मेरा पहला स्पार्क तो तब लगा जब मैंने देखा कि मैं बहुत कुछ कर सकती हूँ। उसके बाद साइंस में मेरी रुचि थी, तो मैंने साइंस में बीएससी बॉटनी में ज्वाइन किया, क्योंकि मुझे बायोलॉजी इंटरेस्टिंग लगती थी। पर मेरा जो मन था वो था मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री में, क्योंकि मुझे मैकेनिज्म्स में इंटरेस्ट था कि जो हम देख रहे हैं डाइवर्सिटी बायोलॉजी की, जो बहुत फैसिनेटिंग डाइवर्सिटी है, उसके पीछे क्या है, राज क्या है, क्यों वो होता है। तो जिस तरह से बॉटनी पढ़ाया जा रहा था, उसका वो प्रश्न का उत्तर मिलना बहुत कठिन था, क्योंकि वो खाली डिस्क्रिप्टिव था। तो बीएससी में मुझे उतना वो मेरा मन में जो वो थे उत्साह था जानने का, वो हो नहीं पाया। पर फिर अगेन मेरी लक बहुत अच्छी निकली कि एमएससी में मेरे को बायोकेमिस्ट्री में एडमिशन मिला। तो उस जमाने में मैं 1971 की बात कर रही हूँ, तब बायोकेमिस्ट्री मॉलिक्यूलर बायोलॉजी इंडिया में अभी एकदम शुरुआत ही थी। मतलब कोई वहाँ पे डिग्री नहीं मिल सकती थी आपको, और छोटे छोटे मतलब होते थे कि बस एक सब्जेक्ट किसी कोर्स में आपको पढ़ा रहे हैं। तो मुझे वो डिटेल में पढ़ना था, और लकीली मेरे को वो पूरी दिल्ली में 2 ही सीट थी बायोकेमिस्ट्री की, और मुझे वो मिल गया एमएससी का। और जब मुझे एमएससी बायोकेमिस्ट्री की एडमिशन मिली, तो आई थिंक दैट वाज माय बिग टर्निंग पॉइंट, बिकॉज बहुत लकी थी मैं कि वो डिपार्टमेंट बहुत अच्छा था, सारे टॉप साइंटिस्ट थे जो हमें पढ़ा रहे थे। और मॉलिक्यूलर बायोलॉजी उस टाइम पे जैसे एक्सप्लोर कर रही थी वॉल्केनो के जैसे, मतलब सो मेनी नोबेल प्राइजेस, हरगोबिंद खुराना गॉट नोबेल प्राइज, तो देयर वाज सो मच टू लर्न, जेनेटिक कोड, जीन एक्सप्रेशन कैसे रेगुलेट होता है, लैक्टोज ऑपरॉन, एंड देन यू नो देयर वर एवरीडे न्यू डिस्कवरीज आर बीइंग मेड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में। सो इट वाज अ वेरी वेरी fascinating time. So MSc I think was for me the big turning point. उसके बाद again there was a lot of family pressure that you know you would have studied enough, now get married. But then I knew, at that time I knew that no, I have to do PhD. I have to learn how to do science. साइंस करते कैसे हैं, कैसे एक्सपेरिमेंट, कैसे क्वेश्चन पहले निकालते हैं मन में कि मुझे ये स्टडी करना है, और फिर कैसे एक्सपेरिमेंट्स को प्लान करते हैं, कैसे एग्जीक्यूट करते हैं, मुझे वो सीखना है। तो वो तमन्ना के साथ फिर मैं पूरा पीएचडी में जुट गई, और उसके बाद फिर मैं पोस्ट डॉक के लिए गई। फिर जो नेक्स्ट चैलेंज आता है, जब तक आप स्टूडेंट हैं, आप पीएचडी कर रहे हैं, तो आप स्टूडेंट हैं, आपको कोई सिखा रहा है, पोस्ट डॉक में आपको थोड़ा इंडिपेंडेंस मिलता है, पर तब भी आप किसी और के प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं। तो जब नेक्स्ट चैलेंज आता है, जब आप खुद फैकल्टी बनते हैं, अब आपकी अपनी लैब है और आपकी अपनी प्रॉब्लम है जिसको आपको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले आपको प्रॉब्लम ढूंढनी पड़ती है कि मैं स्टडी क्या करूं, क्या है जो मुझे रियली एक्साइट करता है, और मेरे में वो कैपेबिलिटी है, उसको मैं स्टडी कर सकती हूँ कि नहीं। अगर मेरे में वो कैपेबिलिटी नहीं है, पूरी तरह से कोई कमी है, तो फिर अगेन मुझे कहीं पर जाके सीखना पड़ेगा वो। तो साइंस में इट इज अ कंटिन्यूअस एजुकेशन प्रोग्राम, इट्स नॉट दैट आपने एक बार कुछ शुरू किया तो आपको और कुछ सीखने की जरूरत नहीं है, पर आप शुरुआत उससे करोगे जिसपे आपका एक सॉलिड फुटिंग है। तो ये सब मन में रखते हुए मैं फिर जब इंडिया आई वापस और मैंने जेएनयू ज्वाइन किया, तो मैंने एंटोमीबा हिस्टोलिटिका पे काम करना शुरू किया। वो एक पैरासाइट है, वो पैरासाइट हमारे इंटेस्टाइन में रहता है, और एमीबाइसिस जो एमीबिक डिसेंट्री होता है वो उसका कॉज करता है। तो क्यों मैंने उस पर शुरू किया काम, उसके पहले तक हमेशा मैं इकोलाई जो बैक्टीरिया है उसी पे काम कर रही थी, क्योंकि इकोलाई ही मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के लिए सबसे अच्छा, सबसे सुविधापूर्ण सिस्टम था, उस पर ही सबसे ज्यादा रिसर्च हो रही थी, और इजी भी था उस पर काम करना।
पर मुझे लगा कि अब मैं इंडिया में अगर काम कर रही हूँ तो मुझे थोड़ा सा अप्लाइड डायरेक्शन की तरफ भी सोचना चाहिए। और अमीबाइसिस तब इंडिया में बहुत ज्यादा प्रेवलेंट था। आज तो अमीबाइसिस थोड़ा कंट्रोल में हुआ है क्योंकि हमारे पास एक ड्रग है जो काफी इफेक्टिव है, पर तब अमीबाइसिस बहुत एंडेमिक था इंडिया में। तो एंटमीबा जो है वो सिंगल सेल पैरासाइट है, वो कॉम्प्लिकेटेड ऑर्गेनिज्म नहीं है, सिर्फ एक ही सेल है उसका, और वो सेल ही डिफ्रेंशिएट करता है। वो ट्रोपोजोइट होता है जो ग्रो करता है, डिवाइड करता है, फिर वो सिस्ट बन जाता है जब वो उसका रेस्टिंग स्टेज होता है। तो खाली ये 2 ही स्टेजेस होते हैं, ट्रोपोजाइट टू सिस्ट। फिर जो सिस्ट हमारी बॉडी में जाता है तो फिर से वो ट्रोपोजाइट बनता है, और फिर वो ट्रोपोजाइट जो है वो मल्टीप्लाई करके एमीबाइसिस कॉज करता है। तो मुझे लगा कि ये सिस्टम इंटरेस्टिंग है। और उस टाइम पे ये जो पैरासाइट थे, प्रोटोजोन पैरासाइट, सिंगल सेल पैरासाइट, इनमें मॉलिक्यूलर बायोलॉजी भी बहुत इंटरेस्टिंग आ रही थी। तो वैसे तो देखिए डीएनए और जीन एक्सप्रेशन के बहुत कॉमन फंडामेंटल्स हैं जो हर ऑर्गेनिज्म में कॉमन होते हैं, पर उसके ऊपर हमें पता है कि बहुत वेरिएशंस होते हैं, हर ऑर्गेनिज्म के अपने वेरिएशंस हैं। तो ये प्रोटोजोन पैरासाइट्स में भी अपने वेरिएशन निकल के आ रहे थे जो कि बहुत फैसिनेटिंग थे। तो मुझे लगा कि ये अच्छा सिस्टम होगा जिसमें हम कुछ नया भी ढूंढ सकेंगे जो इक्वलाई में नहीं होता। तो मैंने शुरू किया काम, पर चैलेंज था बहुत बड़ा, क्योंकि तब तक इंडिया में, तो अब मैं बात कर रही हूँ जब मैंने अपनी लैब सेटअप की 1985, 86 में मैंने सेटअप की, पर उसके 1 साल पहले मैं सोच रही थी कि कैसे करूँगी। तो तब मैंने रियलाइज किया कि अगर मेरे को एंटोमीबा की मॉलिक्यूलर बायोलॉजी करनी है तो आई हैव टू नो हाउ टू ग्रो द पैरासाइट इन द लैब। और इंडिया में कहीं पे ये पैरासाइट ग्रो नहीं हो रहा था। तो तब तक जो रिसर्च था वो क्लिनिकल, मतलब हॉस्पिटल्स में हो रहा था या उनके साथ अटैच्ड लैब में हो रहा था। तो वो लोग उनको बहुत ज्यादा पैरासाइट नहीं चाहिए, वो स्टूल सैंपल से पैरासाइट निकाल के माइक्रोस्कोपी या फिर एलाइजा जो एंजाइमिक इम्यूनोसॉर्बेंट ऐसे उस तरीके के, उससे वो उनका काम चल जाता था, उनको ज्यादा ग्रो नहीं करना था। पर मुझे था कि मुझे प्योर कल्चर चाहिए, काफी सारे सेल, तभी तो मैं उसका फिजियोलॉजी स्टडी कर सकूंगी, उसका मॉलिक्यूलर बायोलॉजी समझ सकूंगी। तो वो चैलेंज था। उसके लिए फिर 1985 में, बिफोर आई जॉइन जेएनयू, आई वेंट वंस अगेन टू एनआईएच, और वहां पे देयर वाज द ओनली लैब इन द वर्ल्ड व्हिच वाज ग्रोइंग द पैरासाइट इन द लैब इन वेरी प्योर कल्चर। तो फिर वहां जाके मैंने वो सीखा, और फिर मैं वापस इंडिया आई। पर सीखने के बाद भी वो इंडिया में बहुत बड़ा चैलेंज था उसको ग्रो करना, क्योंकि उसमें जो कंपोनेंट्स चाहिए वो सब कंपोनेंट इंपोर्टेड थे। और सबसे इम्पोर्टेंट कंपोनेंट था सीरम, जो कि एडल्ट बोवाइन सीरम था। तो एडल्ट बोवाइन सीरम इंडिया में नहीं मिलता था, और उसका बैच टू बैच वेरिएशन भी होता है कि एक बैच में सेल ग्रो करेगा, दूसरे में नहीं करेगा। तो उसके लिए काफी ट्रिकी था। अब मैं इसलिए ये बता रही हूँ क्योंकि देखिए, जब आप कोई भी प्रोजेक्ट में शुरू करते हैं उसमें चैलेंजेस आते हैं, वो तो 100% हर प्रोजेक्ट में चैलेंज आते हैं। तो आप चैलेंज से तो थोड़ा घबराना, वो तो हर ह्यूमन नेचर है, हम थोड़ा घबराते हैं कि अब क्या होगा। पर एज अ साइंटिस्ट हमें क्या करना होता है, हमें 2 पैरेलल स्ट्रीम में अपना प्रोजेक्ट चलाना होता है। एक स्ट्रीम है जो चैलेंजिंग है, जिसमें हमें टाइम लगेगा उसको सॉल्व करने में, और दूसरा स्ट्रीम है जो काफी आसान है, मतलब रिलेटिवली वो थोड़ा श्योर शॉट है, उसमें तो कुछ आएगा। क्योंकि अब जब मेरे को जेएनयू में पोजीशन मिली तो अब तब तक तो मैं अकेले काम कर रही थी, अब मेरे को स्टूडेंट्स हैं, स्टूडेंट्स को गाइड करना है, स्टूडेंट्स को पीएचडी दिलवानी है। तो स्टूडेंट को अगर मैं सिर्फ चैलेंजिंग प्रोजेक्ट दूंगी तो 4-5 साल के बाद उसका कुछ भी डेटा नहीं आएगा, तो वो कैसे पीएचडी करेगा। इसलिए ये था कि 2 पैरेलल स्ट्रीम में मुझे काम करना है, एक वो जो थोड़ा श्योर है और एक चैलेंजिंग। तो मैंने क्या किया, मैंने अमीबा के जो जीन्स थे, जो जो जिन पे मुझे काम करना था, उनको मैंने इकोलाई में क्लोन किया। और फिर तो अब मैं 1986 की बात कर रही हूँ, 86-87 जब मेरी लैब सेट हुई, तो उस टाइम पे इंडिया में सीक्वेंसिंग, डीएनए सीक्वेंसिंग नहीं हो रहा था। और आजकल जो आपको पता है कि नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग के तहत सीक्वेंसिंग कितना आसान हो गया है, हम लोग खाली अपना सैंपल भेजते हैं और हमें सीक्वेंस आ जाता है। तो तब वो बिल्कुल नहीं था, तब सब सीक्वेंसिंग मैनुअल होता था,
और बहुत लेबोरियस और स्लो प्रोसेस था, और इंडिया में बहुत ही कम कोई सीक्वेंस कर रहा था। तो मैंने वो सेटअप कर लिया अपने लैब में, क्योंकि वो एक टेक्निक था जो किया जा सकता था। मैंने उसको सेटअप कर लिया। तो 87-88 में मेरी लैब जेएनयू में फर्स्ट थी जो सीक्वेंस कर पाती थी। तो तब मैंने इकोलाई में जीन्स को क्लोन करके सीक्वेंसिंग शुरू किया, जो कि आजकल के ज़माने में वो कुछ भी नहीं है, पर तब वो बहुत बड़ा अचीवमेंट था कि हमारे पास सीक्वेंस है, वो सीक्वेंस से हम वो जीन के फंक्शन के बारे में पता कर सकते हैं। और पैरेलल मेरा चल रहा था कि अमीबा को ग्रो करना, और उसमें से ग्रो करके उसके, जैसे अगर मुझे डीएनए रेप्लिकेशन स्टडी करनी है तो डीएनए रेप्लिकेशन के लिए मैं सेल्स को सिंक्रोनाइज करके, और फिर मैं देखूंगी कि कहाँ पे रेप्लिकेशन ऑरिजिन है, वो सब तो मेरे को सेल ग्रो करके ही पता चलेगा। पैरेलल में वो चल रहा था। तो फिर टाइम आया कि जब मेरे वो ग्रोथ भी मेरा अच्छे से सेटअप हो गया, और फिर मेरे लिए वो भी जो एक रोड ब्लॉक था वो भी हट गया। तो इस तरीके से हम अपने प्रोजेक्ट को जब भी आगे बढ़ाते हैं तो हमें पता होना चाहिए कि चैलेंजेस हर साइंटिस्ट के लाइफ में आते हैं। ये सिर्फ इंडिया में नहीं, वो यूनिवर्सल है, क्योंकि साइंस है ही वो कि हम किसी अननोन टेरिटरी में जा रहे हैं, और अननोन टेरिटरी में तो चैलेंजेस आएंगे ही। तो इस तरीके से मैंने अपना पूरा एक्टिव लाइफ जेएनयू में एंटोमीबा के ऊपर काम करके बिताया। और अब मैं रिटायर होने के बाद मेरे पास लैब नहीं है, पर तब भी मेरे को समझ में आ रहा है कि साइंस में कोई अंत नहीं है, तो बिना लैब के भी कितना काम कर सकते हैं, वो अब मैं कर रही हूँ। तो अब मैं एक रेयर जेनेटिक डिजीज पे काम कर रही हूँ। रेयर जेनेटिक डिजीज वो हैं जो हमारे बॉडी में कोई भी म्यूटेशन के वजह से आते हैं, और क्योंकि वो इतने कॉमन नहीं है, जैसे कैंसर बहुत कॉमन है, डायबिटीज, हार्ट डिजीज। तो ये रेयर इसलिए है क्योंकि ये कोई पर्टिकुलर डिजीज जो है उसके नंबर ऑफ पेशेंट कम है। पर ये जो डिजीजेस हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं ऑब्वियसली, क्योंकि ह्यूमन बीइंग को चाहे वो कम भी पेशेंट हो तो उसके लिए तो वो प्रॉब्लम है जिसका सोल्यूशन चाहिए। इसके लिए जो ड्रग्स हैं, अब क्योंकि आपको जैसे पता है क्रिस्पर कैस टेक्नोलॉजी आ गई है, और स्टेम सेल थेरेपी के वो हमारे पास अब वो आ गया कि हम किसी भी टिश्यू से स्टेम सेल बना सकते हैं। तो कॉम्बिनेशन इन सब के जो है, अगर हम मिलाएं तो रेयर जेनेटिक डिजीज को सॉल्व करने के लिए अब हमारे पास टेक्नोलॉजीज बहुत बढ़िया हैं। हम जीन डिलीवरी कर सकते हैं, जीन एडिटिंग कर सकते हैं, जिससे कि जो जेनेटिक डिफेक्ट है उसको हम ठीक कर सकते हैं। दूसरा, आपने सुना है कोविड के टाइम में जो वैक्सीन सबसे सक्सेसफुल बनी वो मैसेंजर आरएनए वैक्सीन थी, एमआरएनए वैक्सीन। तो मैसेंजर आरएनए एक्चुअली जीन थेरेपी के लिए, जेनेटिक डिजीज के लिए एक बहुत अच्छा सोल्यूशन है, क्योंकि हम मैसेंजर आरएनए अगर डिलीवर करते हैं टिश्यू में तो वो सही मैसेंजर आरएनए होगा, उसमें म्यूटेशन नहीं है, तो वो हमें करेक्ट प्रोटीन दे देगा। तो अब मैं क्या कर रही हूँ, क्योंकि मेरे पास तो लैब नहीं है, पर अब मैं क्या कर रही हूँ कि मैं साइंटिस्ट को बता रही हूँ, जो यंग साइंटिस्ट हैं जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं। जैसे मैं एक मसल डिजीज पे काम कर रही हूँ, तो काफी साइंटिस्ट हैं जो मसल पे काम करते हैं, वो अपने डिफरेंट इश्यूज पे मसल में काम करते हैं। कुछ साइंटिस्ट हैं जो स्टेम सेल पे काम करते हैं, तो उनको मैं बता रही हूँ कि क्यों ना हम इस डिजीज पे भी काम करें। तो वो लोग बहुत एक्साइटेडली वो करते हैं कि हाँ, ये, क्योंकि हर साइंटिस्ट चाहता है कि उसका जो काम है उसका कुछ एप्लीकेशन भी हो, तो उसको बहुत अच्छा लगता है। तो अब मैं थोड़ा सा ये कर रही हूँ, एडवोकेसी कर रही हूँ अबाउट रेयर जेनेटिक डिजीज अमंग साइंटिस्ट, अमंग्स डॉक्टर्स, एंड ऑल्सो अमंग्स पेशेंट्स। पेशेंट्स को समझ में नहीं आता है तो वो कई बार फालतू के उसमें चले जाते हैं थेरेपीज में। जैसे स्टेम सेल थेरेपी हर डिजीज का इलाज नहीं कर सकती, पर वो बहुत सारे ऐसे हैं डॉक्टर्स जो गलत मतलब पैसा कमाने के लिए वो गलत एडवर्टाइज करते हैं, और 2-2 लाख 3-3 लाख लेके स्टेम सेल दे देते हैं पेशेंट को, उसका कोई लाभ नहीं होता। तो पेशेंट एडवोकेसी में भी मैं काम कर रही हूँ। तो यही मेरी अपनी ट्रैजेक्टरी मैंने बताई आपको, and I'll be very happy to take any questions, especially students जो हैं, if I can motivate even a few of you, I'll be really honored. Thank you. Thank you, Professor Bhattacharya.
एंड मोर सो हिंदी में हम सबसे बात करने के लिए ये भी अपने में एक बहुत बड़ी बात होती है कि हम अपने काम को और अपनी लाइफ को अच्छे से समझा पाए इन नॉर्मल वर्ड्स. I do not see much questions right now, but I request all the students, if they have questions, to please put it in the chat box. If there is anything you would like to ask, then we will definitely get back to you on that. And I, on behalf of all of us, I would like to say that your words today are not only inspiring for the younger generations, but for us. आपने जब काम शुरू किया तब इतना रोल मॉडल नहीं था, but हमारी जनरेशन और आगे आने वाली जनरेशन के लिए हम लकी हैं. We have role models like you, and there are 3 things that definitely we can take. That we have to identify our strength and weaknesses, have confidence, and not to be afraid of challenges. So that is definitely 3 goalposts that all students and all of us here have taken from your inspiring words. Thank you once again very much, and looking forward to further interactions with you. And any questions that come up, we will get back to you, and you can address them. Thank you. Thank you so much. Good luck. Okay, now I ask Reshmji to please take over. Yeah, thank you, Shobna. Thank you, Professor Bhattacharya. So now we have our next speaker with us. We have Dr. Nishat Fatima. She's the Chief Scientist in CSIR's Central Leather Research Institute, India. She holds BTech, MTech, and PhD degree in leather technology from Anna University, Chennai. She's a gold medalist at both undergrad and postgrad levels. She's a recipient of prestigious DART Fellowship. Her work is focused on protein assemblies and has made significant contribution on the use of ionic liquids in the stabilization, destabilization process of collagen. In recognition of her contributions, she has been awarded the prestigious INSA Medal for Young Scientist, INA Young Engineer, IEI Young Engineer Award, SCRB Women Excellent Award, and many more. The list is very long. I will not probably read here all of her achievements. I don't think we have enough of the time for that. So with this, I would like to invite Dr. Nishat to please share your words of Dr. Anandibai Joshi. Thank you so much. Thank you so much, Ashamjit, for that very nice introduction. And after hearing Professor Bhattacharya, I'm like, as Shobna was saying, we have role models, we see them as our role models. And thank you, ma'am, for that. And I see a lot of, children eagerly sitting over there. I'm sure sabko kahani pasand hai, right? Everybody loves to hear a story. So I'm going to share a story with you today. So let me share my screen. Okay. So is my slide visible? Yes, ma'am, visible. Oh, right. Okay. So long ago, there lived a person about whom we are going to discuss now. And who is this person? Well, she happens to be the first female physician of our country. And I should have written her name and said that, yeah, I'm going to talk about her, right? Instead, मैंने क्या लिखा है यहाँ पे? Story of a change maker. तो ये change maker कहाँ से आया भाई? Now I'll explain. Well, our father of the nation, Mahatma Gandhi ji, has said, be the change that you want to see in this world. If you think, yes, ठीक से काम नहीं कर रहा है, society का road ठीक से नहीं है, you have so many problems which you face every single day, correct? So you keep complaining, this is not right, fan nahi chal raha hai, air condition nahi chal raha hai, all that stuff. So why do you complain? Instead, if you think that you have to bring about a change, one should be the change that you want to see. That's exactly what Mahatma Gandhi ji said. And as an example to that is what Anandibai Joshi was. If you go back and look at her lifespan, she's practically, was less than 22 years old
when she died. So, एक हिंदी का dialogue है, हिंदी film का dialogue. This Rajesh Khanna says, Babu Mishai, zindagi lambi nahi honi chahiye, but buland honi chahiye. Right? So she is an example for that. You don't need a long life to prove what you want to do. Right? You make an impact in the short span of time, and that's exactly what Anandibai Joshi did. Now, when we talk about medicine, I just want to quote Hippocrates here, where he says, wherever the art of medicine is loved, there is also love of humanity. Because generally we say doctors is a noble profession. Why? Because they really touch upon the lives of people, and people consider Bhagwan types, right, for doctors. So why are we celebrating Anandibai Joshi? Is that because she's just the first female physician? Well, she is the first female physician of our country. But what makes her special is that she is not only the first female, physician of our country. In fact, she happens to be for the first South Asia itself, and she is the first person of the Indian origin with a degree in medicine from the United States. And she's also believed to be the first Hindu woman to set foot on the American soil. Well, she has done all these first things, right? So, इन्होंने कैसे ठान लिया कि मुझे doctor बनना है, right? You all are students, you're all studying, in schools today. So you all will decide, tomorrow I want to be a doctor, engineer, scientist. I mean, you all have dreams, correct? So what made Anandibai Joshi to decide that I want to be a doctor? Imagine at that time, women were not considered to be, a doctors, right? Well, can you guess the age she was married? She was married at the age of 9. So at that age, imagine at that point of time, I'm talking about 1880s and all that, there was child marriage, which was prevalent in the society. So इनकी शादी 9 साल की उम्र में हुई थी, and she gave birth to a child at the age of 14. Imagine, many of you will be at that age still in school. So इस ज़माने में तो we can't even think about those things. But those days, that was the situation. So, जब इनकी शादी हुई थी, she was 9 years old, and she had the first child when she was 14 years old. Obviously, when you have a child at that young age, you will end up, having complications. So she lost her baby. And it was at that point of time, उन्होंने ठान ली कि मुझे डॉक्टर बनना है, ताकि I will make sure no other mother goes through this process. So you can imagine, what motivated her for that. So as a child bride, she went on to be the first licensed women doctor of our country. And she is lauded on 3 different continents for success. Why? Because at that time, India was under the British rule, right? So when she did her MBBS MD, she was sent a congratulatory note from none other than the Queen of England. So she is celebrated there, of course, in our country, and even in US. Well, she was an intelligent and industrious person, and these qualities were actually brought to mockery. Because, उस ज़माने में, लड़कियों का पढ़ना ही बहुत बड़ी बात थी, and उसके ऊपर doctor तो, as I said, she was the first one. So nobody had been there before her. So naturally, you can imagine, what kind of resistance she would have got. Though she was very intellectual and and she was in a supportive environment, at home wise, she found insulted in the streets, when people said, isko kyun padhna hai, that kind of negative remarks. Yet the best part of it is, generally, whenever we talk about women freedom and all that, we try to put down men. But trust me, it is the men who actually support a woman. If a woman has to be successful, she has to have a man behind her. People say this quote, behind every successful man, there is a woman. Ultha bhi sahi hai. Behind every successful woman, there is a man.
And iske liye example is again Anandibai Joshi's life. Her husband Gopal Rao, he really supported her, and in fact insisted that yes, she should go and study abroad. Imagine, nobody from India though, and women, goes abroad. Padhna hi bahut badi baat hai. Wo bhi abroad jaake padhna to, it's like never heard of. So, she had to face a lot of hurdles, and her husband stood behind her. So he supported her and made her dreams come true. And the reason, imagine us zamane mein, like, if a woman has to give birth to a baby, there was maybe a midwives, we used to have. Otherwise, if you have to go to a doctor, there were no female doctors. There were only male doctors. And you can imagine the shyness which female patients will have to go through at that point. So it was that she wanted to overcome. And so she graduated in medicine from the Women's Medical College of Pennsylvania in 1886. And immediately, shortly after that, she was awarded, an appointment letter to work in the female ward of Albert Edward Hospital in Kolhapur. Unfortunately, she could not pursue this for long because of her tuberculosis. She contracted tuberculosis and, died, as I said, at a very young age of even less than 22. But her last words were, I have done all that I could. Iska matlab kya hai? Like, she has literally set the path. Today, if you go to a hospital, you will find equal number of female doctors as male doctors. In fact, you go to any pediatric ward or any, gynecologist, it is mostly women, in fact, right? So which means, imagine when she was wanting to do this, people made her life miserable. They said, like, kya bak rahe ho? I mean, what do you think you're doing? I mean, people opposed her, people insulted her. But she, those words, what she has said here, I have done all that I could. Because she has actually set the path, she cleared the path for us to travel in that. So she was the first ray of hope for change. Remember, I said she was a change maker, right? For women to even dream. And today, if somebody says, okay, mujhe NEET likhe, mujhe MBBS degree lena hai, agar if it's a female student, a girl who's wishing to do that, she has to thank Anandibai Joshi. So she was truly a trailblazer. And there are many such women. In fact, as Shobna was also mentioning, we have a lot of role models. In fact, my own life, if I have to say, I would consider Dr. Aruna Dattatreyan. She was my mentor and a great role model for me. So we have a lot of people who inspire us today. In fact, I would like to just point out two people who are in the same platform today. Dr. Gagandeep Kang, she's the first women FRS from India. You can believe that, in 359 years of history of this prestigious academy, 2019 mein hi first women ko mila, and that is Dr. Gagandeep Kang. And she's also the first Indian and first ever women to edit Manson's textbook of tropical medicine. That's kind of considered as a Bible for, medical students. And she's a medical scientist. She's working on, diarrhea diseases, of course, in CMC Vellore. And she played a very pivotal role in devising and developing an Ravantegran vaccine to equip against the rotavirus. In fact, at that time, you must have, of course, this generation is very famous for one virus, which is coronavirus. Like in us zamane mein, few decades back, we had this rotavirus, and she has done commendable work on that, which has led that 359 years academy to award the first FRS as a women scientist to her. And as I said, we also have Dr. Sudha Bhattacharya here, who is a world-renowned molecular biologist, academician, and a writer. Thank you, ma'am, for joining us today. In fact, you heard it from her. उन्होंने खुद अपनी story बताई थी, कैसे उन्होंने, generally when people go to Harvard and all that, they never come back, right? People try to, get settled there, but no, she decided to come back, set up her own lab here, and do extremely good work in the field of, molecular biology, especially in E. histolytica. And in fact, जैसे मैम ने अभी बताया, she's right now focused on rare genetic disorders. In fact, her work today
impacts people's lives. Like, she has started this non-profit organization, which is, trying to communicate to people, unko batana cha rahe hain ke, bhai, if you get this so-called, disease, which is because of your genetic disorder, you don't have to shun those people out. There's a stigma attached with that. Somebody is alag se hai, so naturally people shun them off. So I think she's reaching out to such people. Thank you so much, ma'am, for this wonderful work which you are doing. And how could I miss out all those role models who are part of INYAS itself? We call the women in INYAS as WINYAS. So we are the winners. So we decided this was a compendium which we have released on the all the women in INYAS. So and in fact, the title of this flagship event itself is WiSDom, Women in Scientific Domain. So that spells, the importance which INYAS is giving to enable women or being an inclusive group. So I'm so very proud and happy that I'm part of INYAS. And yeah, so this is cartoon just for the sake of fun. So this boy here is asking his mom, what does this sign say? It says women work all the time. When men work, well, they need to put up signs. So what is the take-home message? I'll just play this video here for you. Just watch this guy Ronaldo, okay? All this guy does is take out that Coca-Cola bottle and put it aside and doesn't say anything. He never says, don't drink Coca-Cola, don't, it's bad for health. Kuch bhi nahi keh raha, right? Sirf 5 second ka video hai. He just keeps aside the, Coca-Cola bottles and says, Aqua is water, of course. So, iske baad kya hua hoga? What do you think would have happened after this? Well, it turns out that this impulsive 5-second gesture from Ronaldo, one of the, I'm sure all the kids know who's Ronaldo, famous football player. It cost Coca-Cola an unimaginable $4 billion का crash हुआ था. उनका stock market में जो उनका share price था, एक ही दिन में 4 billion घट गया because of Ronaldo's 5-second का just putting aside that Coca-Cola bottle. So you can imagine the impact of one individual. What I'm trying to communicate here is, अगर आपको लग रहा है कि I'm just an individual, what can I do? मैं क्या कर सकता हूँ या क्या कर सकती हूँ? Remember, it was one individual, Anandibai Joshi, who decided that she'll become a doctor. And today we have so many female doctors in our country, right? And similarly, this is also an example to tell you that एक बंदे से, कितना लाखों का नुकसान या करोड़ों का नुकसान हो सकता है. The point is, never imagine that you can't do it. Believe in yourself. Remember what this kitty is seeing here. It is imagining itself as the counterpart of the cat family. And it all starts with you. I just want to give this, poem which I happened to come across in one of the websites. तू अपनी खूबियां ढूंढ, कमियां निकालने के लिए लोग है ना. अगर रखना है कदम तो आगे रख, पीछे खींचने के लिए लोग है ना. सपने देखने हैं तो ऊंचे देख, नीचा दिखाने के लिए लोग है ना. अपने लिए जुनून की चिंगारी भड़का, जलने के लिए लोग है ना. खुद की अलग पहचान बना, भीड़ में चलने के लिए लोग है ना. तू कुछ करके दिखा दुनिया को, तालियां बजाने के लिए लोग है ना. So this is for all those kiddos out there. The future is full of surprises and unintended consequences. So I wish you all the very best. Thank you.
Thank you so much, Dr. Nishad, for such a power-packed presentation. I mean, you're such a wonderful, wonderful speaker, I must say. And I must tell our audience that Dr. Nishad had conducted all the wisdom events last year. So, I mean, she's very experienced in this thing, and it was just a pleasure to hear you. So maybe just one or two questions which I can quickly ask you. So what inspired you while growing up? Like, who was your role model? You always wanted to be a scientist, or you had some other aspirations? Well, like any kiddos these days, so my aspiration when I was in school was to be a doctor, not a PhD one, the medical wala doctor, like Bai Joshi. But destiny had its own plans. I didn't even take biology in my 11th and 12th, so you can imagine. So that changed the path in which I went. So became a PhD doctor, and to a large extent, the reason why I am in science or doing research is because of my guide, Dr. Ramasamy. He actually made me come into research. So all thanks to him. Thank you. Thank you so much, Dr. Nishad. It was lovely to hear from you. So now I request my colleague, Dr. Shobna, to please take over. Yes, thank you, Dr. Nishad, once again. Okay, so now we go and move forward to equally exciting thing in this event, which is having our quiz. Just a few points for everyone who will be participating. The quiz will be on a Google platform, which means that we will share a link with you both on YouTube and on your devices via Zoom. You can click on the link and start filling your details and start having or attempting the quiz. There will be no negative marking, and all the questions are compulsory, which you would have to answer. In case of a tie, there will be a second round for top quizzers, and most importantly, the quiz will be of fixed duration of 5 minutes. So ensure that you are able to fill in all the details and complete the quiz within time. So with this now, let us start to take this quiz, and you can see the link both here as well as in YouTube. Please have a look at both YouTube and here. The YouTube has the link now. The link is also now in the chat box in Zoom.
We have 3 more minutes. We already started getting responses. Two more minutes. We will now be stopping in 1 minute. So kindly finish. Okay, the time is up. Thank you everyone for participating. We have got a good response and we will get back with the results soon. For now, I request everyone to have their video open so that we can all take a group picture just for a few seconds. And I request Ananya to please take over for taking a screenshot. Another announcement, we also request everyone to stay back till the end and fill the feedback form so that we can make this event as per any suggestions that our young audience would like to give.
Okay, requesting Ananya to take over and let us know for when the picture is taken so that we can proceed ahead with the technical session. Done with the snapshots. We can all say cheese. Have a lot of smiling faces. Yes. Great. Done with the snapshots, ma'am. Okay, great. Thank you. Oh, sorry. I request now Professor Jeevan to take over and continue with the next session. Thank you. Thank you very much, Shobna. Welcome back, everyone. So I'm sure now the students must be enjoying our program and having a very nice learning session by listening to our scientists and speakers who are really great, doing great in their respective fields. And now as we move on, I would like to introduce our today's chief guest, Professor Gagandeep Kang. Professor Kang is an eminent Indian microbiologist and virologist who is a professor at the Department of Gastrointestinal Sciences at CMC Vellore. She also did her MBBS from the same institute in the year 1987 and her MD in microbiology in the year 1991. She earned her doctorate from CMC Vellore in the year 1998. Professor Kang is a very well-known eminent scientist, and she served as the executive director of the Transnational Health Science and Technology Institute, THSTI, Faridabad from August 2016 to 2020. She has further established several laboratories to test various vaccine trials, and she's fondly touted as the vaccine godmother of India. She has actually played a very significant role in our fighting against COVID-19. Professor Kang is renowned for her multidisciplinary research on transmission, occurrence, treatment, and repercussions of enteric children diseases in India. She has been conferred with several very prestigious awards that includes the very prestigious Infosys Prize in Life Sciences in the year 2016. She is also the first Indian woman to be elected as the Fellow of Royal Society. She has published several scientific articles, more than 300 to mention, and she is serving as the editorial board member for several international journals. However, due to some unavoidable circumstances, Professor Kang could not join us in person today. But to be very fortunate enough, we have her message and video recorded with us. And now I would like to request Ananya if she can kindly play the video for our students. Ananya, over to you. I hope the screen is visible and I start the recording now. Yeah, screen is visible. और मैं आज अपनी फैमिली में आपसे बात करना चाहती हूँ। मैं एक वायरस से काम करती हूँ। इस वायरस का नाम है कोरोना वायरस और रोटावायरस गैस्ट्रोएंटेराइटिस कराता है। ज्यादातर बच्चों में ये दस्त छोटे बच्चों कारण रहता है। 40% of all diabetes in children are caused by rotavirus in developing countries. तो इस वायरस में 20 साल से ज्यादा समय के लिए काम कर रहे हैं और मैं इस काम के बारे में बताना चाहती हूँ और उसके पहले तो मेरा शिमला में हुआ था वहाँ पे मेरी नानी रहती थी और मेरे फादर
प्लेलिस्ट काम करती थी और इस वजह से हम एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करते थे। अपनी क्लास को जाती थी तो हमेशा करना पड़ता था, तो कर जाते हम करते कर जाते और मैं इतने सारे उस समय जब मैं स्कूल जाती और बहुत नाचना स्पोर्ट्स सिखाने के लिए तो बहुत सारा एक्सपोजर हुआ था। जहाँ भी शिफ्ट करते थे तो ज्यादातर छोटे रूरल एरियाज में जाते वहाँ के स्कूल्स तो टीचर्स अच्छे स्कूल में गई तो वहाँ पे जो टीचर्स थे बहुत ही अच्छे थे और मेरी बायोलॉजी टीचर भी और मेरे मैथ्स टीचर बहुत ही अच्छे थे। तो मैथ्स और बायोलॉजी सब्जेक्ट्स थे और उस वजह से जब मैं स्कूल खत्म किया तो जो कम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं और मेरे स्कूल में वो एग्जाम्स लिए और हिस्ट्री मेडिकल Huh? Okay. Hello. I think the video is not audible. So is it audible, audience? And Neha, is it audible? Oh, it was not so clearly audible. I cannot hear you. I'm not audible. Yeah, Neha, it's not audible, right? Yes, So I'm audible. yeah. Okay. So I'll try replaying the video, Ananya. Yes, please share. Okay, let me try. नमस्ते, मेरा नाम गगनदीप कांग है और मैं आज अपने काम के बारे में आपसे बात करना चाहती हूँ। मैं एक वायरस पे काम करती हूँ। इस वायरस का नाम है रोटा वायरस और रोटा वायरस डिहाइड्रेटिंग गैस्ट्रोएंटेराइटिस कराता है ज्यादातर बच्चों में। ये दस्त है और अगर हम देखें कि दस्त के कारण ये ही सबसे महत्वपूर्ण कारण रहता है। 40% of all diarrheas in children are caused by rotavirus in developing countries. तो मैं इस वायरस पे 20 साल से ज्यादा समय के लिए काम कर रही हूँ और मैं इस काम के बारे में बताना चाहती हूँ। और उसके पहले मैंने सोचा था कि पहले मैं आपको अपने बारे में कुछ बताऊं।
तो मेरा जन्म शिमला में हुआ था। वहाँ पे मेरी नानी रहती थी और मेरे फादर रेलवेज में काम करते थे, और इस वजह से हम एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करते रहते थे। उनकी ट्रांसफर हो जाती थी तो हमें शिफ्ट करना पड़ता था। तो हम पंजाबी हैं, पर हम कभी पंजाब में रहे नहीं हैं। और मैं इतने सारे स्कूल्स में गई हूँ, और उस वक्त जब मैं स्कूल जाती थी, एक स्कूल से दूसरे स्कूल बदलने में दिक्कत होती थी, तो पढ़ाई बहुत बहुत करनी पड़ती थी। तो मैं पढ़ाई में अच्छी थी। और मेरे जो पेरेंट्स थे उन्होंने बहुत कोशिश की थी गाना, नाचना, स्पोर्ट्स सिखाने के लिए। तो बहुत सारा एक्सपोजर हुआ था। हम जहाँ भी शिफ्ट करते थे तो वो तो ज्यादातर छोटे शहर रहते थे या रूरल एरियाज में, जहाँ पे रेलवे कॉलोनीज होती थी, वहाँ पे स्कूल्स थे। तो टीचर्स ज्यादातर अच्छे नहीं थे। तो जब मैं कलकत्ता गई और वहाँ पे एक अच्छे स्कूल में गई, तो वहाँ पे जो टीचर्स थे बहुत ही अच्छे थे। और मेरी बायोलॉजी टीचर और मेरे मैथ्स टीचर बहुत ही अच्छे थे। तो मैथ्स और बायोलॉजी मेरे फेवरेट सब्जेक्ट्स थे। और उस वजह से जब मैंने स्कूल खत्म किया तो जो कम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं इंजीनियरिंग और मेडिसिन के लिए, वो एग्जाम्स लिए। और मैं क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज वेलोर में मुझे एडमिशन मिल गई। और वहाँ पे इस मैप को अगर आप देखेंगे तो देखेंगे मैं कितनी जगहों में स्कूल गई थी। और अगर आपको इतना शिफ्ट करना होता है तो अडेप्टेबिलिटी थोड़ी ज्यादा अच्छी हो जाती है। आप सीख लेते हैं कि अगर कोई नई सिचुएशन है तो वहाँ पे अपनी लाइफ कैसे चलानी चाहिए। तो मैं जब वेलोर पहुंची, ये पहली जगह थी जहाँ पे पेरेंट्स नहीं थे। और वहाँ पे मैंने जितने बच्चे वहाँ पे आए थे, हम उस वक्त 17-18 साल के थे, सभी नए थे। और वहाँ पे क्लासेस तो होती थी, पर बहुत सारी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज भी थी। और मैंने उन सब में भाग लिया। प्लेज, ड्रॉप्स, कुछ ऑर्गेनाइजेशन करनी होती थी तो मैं वही करती थी। और वो 5 साल जो मैं हॉस्टल में रही, वो जिंदगी के शायद सबसे अच्छे टाइम थे। पर उसके बाद MBBS करने के बाद ये देखना था कि MD किस सब्जेक्ट में करनी है। मैंने सोचा था शायद ऑफ्थल्मोलॉजी करूं, शायद साइकाइट्री करूं, पर अंत में मैंने माइक्रोबायोलॉजी चुन लिया। और 3 साल वहां पे MD CMC में ही की। और उसके बाद मैं बहुत ही बोर हो गई। मैंने सोचा ये तो मैंने दिन भर, जीवन भर ऐसा काम नहीं करना है, हॉस्पिटल में लेबोरेटरी में काम नहीं करना है। तो जब मुझे रिसर्च करने की अपॉर्चुनिटी मिली तो मैंने वो वहां पे ज्वाइन कर लिया। और उस वक्त जो मेरे बॉस थे उन्होंने कहा कि PhD आपको करनी है क्या? तो मैंने कहा ठीक है। PhD करने की कोई जरूरत तो नहीं थी क्योंकि MD मैंने कर ली थी। पर तब मैं साइंटिफिक पेपर्स पढ़ने लगी, और ये जो पेपर यहाँ पे है लैंसेट में 1991 में, ये अभी अभी निकला था। और उसमें लिखा था कि जो
इकोलाई है, जिसको एंट्रो एग्रीगेटेड इकोलाई कहते थे, वो बहुत ही प्रोलॉन्ग्ड डायरिया, लॉन्ग ड्यूरेशन का डायरिया कॉज करता है। तो मैंने इस पे अपनी पीएचडी की, और पीएचडी में मैंने ये सीखा था कि अगर आप अपने आप सवाल पोज कर सकते हो, सवाल पूछ सकते हो, और उसके जो उत्तर होते हैं अपने आप ढूंढ सकते हो, तो वैसी कोई और फीलिंग नहीं होती है। तो पीएचडी मैंने की, और जैसे यहाँ लिखा है, आई वाज हुक्ड ऑन फ्रेमिंग एंड आंसरिंग माय ओन क्वेश्चंस। तो एमबीबीएस एमडी पीएचडी हो गई थी, तो उसके बाद मैं यूके गई और वहाँ पे एमआरसी पैथ किया। वहाँ देखा कि वहाँ पे क्लिनिकल माइक्रोबायोलॉजिस्ट कैसे काम करते हैं। फिर मैं यूएस गई और वहाँ पे रिसर्च देखा कि वहाँ रिसर्च कैसे करते हैं, और उसके बाद मैं वापस इंडिया लौट आई, ये सोचकर कि यूके और यूएस में बहुत सारे रिसर्चर्स हैं, बहुत सारे क्लिनिकल माइक्रोबायोलॉजिस्ट हैं, पर अगर मैं वापस इंडिया में आऊंगी तो यहाँ पे जो काम मैं कर सकती हूँ बहुत ही कम लोग करते हैं। पर मैंने ये नहीं सोचा था कि जो काम मैं सोच रही थी करने का, वो उसमें कितने चैलेंजेस रहेंगे। तो जिन लोगों के साथ मुझे काम करना था वो वहां से निकल गए, पर दूसरे लोग आ गए। फिर हमने काम पे, घर पे, जहाँ पे सपोर्ट सिस्टम्स की जरूरत थी, वहाँ सिस्टम्स मिल गए। फ्रेंड्स, फैमिली, जो स्टूडेंट्स थे, जब भी कोई भी प्रॉब्लम होती थी, कोई ना कोई आके हेल्प करता था। तो हमने वेलोर से बहुत सारी स्टडीज की। एक हमने आईसीएमआर के साथ काम किया, और आईसीएमआर के साथ एक नेटवर्क एस्टैब्लिश किया, जहाँ पे इन सारे ये जो डॉट्स दिख रही हैं, यहाँ पे हॉस्पिटल्स हैं, और इन हॉस्पिटल्स को हमने एक नेटवर्क में इंक्लूड किया था, देखने के लिए कि इन हॉस्पिटल्स में रोटावायरस कितना दिखाई दे रहा है। और हमें पता चला कि 37% ऑफ जो चिल्ड्रन हॉस्पिटल में भर्ती होते थे दस्त के लिए, उन्हें रोटावायरस था। So this was the most common cause of diarrheal disease in children. तो जो स्टडीज हमने वेलोर में की थी, जो स्टडीज हमने हॉस्पिटल में की, उनसे हमें पता चला कि उस वक्त रोटावायरस के कारण इंडिया में 78,000 डेथ्स, ऑलमोस्ट 80,000 डेथ्स इंडिया में रोटावायरस के कारण हो रही थी। तो हम इससे ये साबित हुआ कि हमें वैक्सीन की जरूरत थी, पर उस वक्त जो वैक्सीन थी वो बहुत ही एक्सपेंसिव वैक्सीन थी। तो हमने बहुत सारे लोगों के साथ काम किया वैक्सीन बनाने के लिए। ये वैक्सीन भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड कंपनी हैदराबाद में है, उन्होंने बनाई थी, और इसकी टेस्टिंग जो होती है लाइसेंस के पहले, ये स्टडीज दिल्ली, पुणे और वेलोर में की गई। और ये वैक्सीन फिर इंडियाज फर्स्ट इंडिजिनस रोटावायरस वैक्सीन, ये 2014 में लाइसेंस हो गई, और 2016 में ये वैक्सीन हमारे नेशनल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम में आ गई। तो 2016 के बाद अगले साल 4 और स्टेट्स को ये वैक्सीन मिली, और फिर अगले फेज में और बच्चों को ये वैक्सीन मिलने लगी। बाय दिसंबर ऑफ 2019 भारत के जितने ही बच्चे हैं सभी को रोटावायरस वैक्सीन मिलने लगी है। और ये जो वैक्सीन्स हैं
सभी इंडिया में बनाई हुई वैक्सीन्स हैं। 2 वैक्सीन्स हैं आप, भारत बायोटेक की और सीरम इंस्टीट्यूट की। और ये गर्व की बात है कि अब ये जो 2 वैक्सीन्स इंडिया में बनी हुई हैं, इनको अफ्रीका में भी इस्तेमाल किया जा रहा है। और हर साल और देश ऐड किए जा रहे हैं जो भारतीय वैक्सीन्स को यूज कर रहे हैं। तो मैं जो काम करती हूँ, 10 पे काम क्यों करती हूँ? क्योंकि 10 की कॉन्सिक्वेंसेस बहुत रहती हैं। अगर हम सोचें, 10 किसी को उत्तेजित तो नहीं करता है, there's no excitement about working with diarrhea, पर जो कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं 10 के, वो बहुत ही भयानक हो सकते हैं बच्चों के लिए। ऐसा दिखता नहीं है, पर अगर आप अच्छी तरह से मेजर करें तो हमें पता चलता है कि डायरिया इज द मेन कॉज ऑफ malnutrition in children. So infections and diarrhea cause malnutrition in children. ये आप बच्चों को आप फोटो में देखो, ये तो बिल्कुल नॉर्मल लगते हैं, पर अगर आप देखें कि ये ग्रीन लाइन क्या है, ये ग्रीन लाइन जहाँ पे N लिखा हुआ है, ये बच्चा 2 साल का है और इसकी हाइट सही है 87 सेंटीमीटर्स। पर जहाँ आप लाल लाइन देख रहे हैं, वो बच्चा 4 साल का है, उसकी हाइट होनी चाहिए 104 सेंटीमीटर्स, पर है 97 सेंटीमीटर्स। ठीक तो लगता है, but he is chronically malnourished, he is stunted. अगर हम बच्चों के बारे में सोचें, जो भी हम कर सकते हैं उनकी मदद करने के लिए, उनको स्वस्थ रखने के लिए हमने ये करना चाहिए। क्योंकि जो हमने रोटावायरस वैक्सीन के साथ किया है, अपने देश के लिए किया है, पर ये वैक्सीन अब और देशों में भी इस्तेमाल हो रही हैं। We can change the world from India. We've done it for rotavirus, and we can and will do it for other vaccines as well. तो अगर हम सोचें साइंस में करियर होना चाहिए, हमें क्या करना चाहिए? मैंने पहले कहा था कि 20 साल नहीं, अब 25 साल हो गए मैं रोटावायरस पे काम कर रही हूँ। पर वैक्सीन बनाने के लिए हमें 14 साल लगे थे। उसके बाद वैक्सीन को इंट्रोड्यूस करने के लिए और 5 साल लगे थे। फिर दिखाने के लिए कि वैक्सीन कैसे काम करती है और 4 साल लगे हैं। तो इसके लिए हमें पैशन चाहिए, कमिटमेंट चाहिए, पर ये भी भूलना नहीं चाहिए कि we live in a society, so it's not just about work. It's good to have friends who build you up and support you. दोस्तों की बहुत जरूरत होती है, और you need to balance your life and your profession. But professionalism matters. Being very good at what you do, it really matters. तो जो भी काम कर रहे हैं उसको क्वालिटी के साथ करना चाहिए। और नेटवर्किंग बहुत इम्पोर्टेंट रहता है। जब आप पब्लिक हेल्थ के बारे में, साइंस के बारे में सोच रहे हैं, तो अपने आप अलग से काम करने से कोई असर नहीं होता है। तो इसलिए लिंकेजेस बहुत ही इम्पोर्टेंट रहती हैं, और इसलिए हमें जो काम हम करते हैं वो हमें ऐसा काम चुनना चाहिए जो हमारे लिए महत्वपूर्ण है, something that really matters to us. And for me, it's been important to have something that mattered to the country. The other important thing is to keep learning. I read papers still. I try to figure out solutions. I try to ask the right questions. ये
बहुत ही important रहता है कि if you need to be a scientist, you need to always be challenging yourself to grow more. So keeping on learning becomes really important. And then finally, if you want to have impact, असर दिखाना है जो काम हमने किया है, तो उसके लिए we have to think about the barriers, think about कौन से बाधे हो सकते हैं और what helps us to overcome those barriers. उन barriers को कैसे हटा सकते हैं या कम कर सकते हैं, ये सोचना और करना बहुत ही important रहता है. मैंने अपनी कहानी आपको बताई है और मैं यही कहना चाहूंगी कि अगर हम सोचे कि इंडिया में हम साइंस के साथ क्या कर सकते हैं, then really the world is the limit. We can change the world working in and from India. Thank you very much. Namaste. Thank you very much, ma'am, for such an inspiring address. आपने बहुत ही सरल शब्दों में अपने जीवन के और अपने अनुसंधान को प्रस्तुत किया एंड मुझे लगता है बच्चों ने इससे काफी कुछ सीखा होगा और वो भी इसे अपने जीवन में एज एन इंस्पिरेशन यूज करेंगे. And now I would like to request the students, so a feedback form has been shared in your chat boxes. So you are kindly requested to fill those feedback forms and stay tuned with us till the end of the program, because now we are finalizing our quiz results and we will be announcing the results shortly. And with this now, I would like to request my colleague, Dr. Mayuri, to take over and move on the program. Thank you. Thank you, Dr. Jeevan. A very good morning to you all. I hope you all are enjoying the session and by listening to all the eminent speakers, eminent scientists in their different fields. Now we have another session on storytelling about our most beloved, one of our most beloved Indian-born American astronaut, Kalpana Chawla, by Dr. Neha Sardana. And it gives me immense pleasure to introduce Dr. Neha Sardana. Dr. Neha Sardana is a BTech from IIT Roorkee and MS from Technical University of Denmark. She did her PhD from International Max Planck Research School for Science and Technology of Nanostructures, Germany. She has served as a scientist at Institute of Nanoscience and Technology for more than 3 years and an assistant professor at IIT Jodhpur. Currently, she is working as an assistant professor at IIT Ropar in the Department of Metallurgical and Materials Engineering. Her research interests are in the field of nanostructured materials and plasmonics and material engineering. She is also an active member of INYAS and also a recipient of very prestigious Young Engineer Award by Institute of Engineers India in the field of Metallurgical and Materials Engineering Division. I welcome you, Dr. Sardana, and also request you to kindly share the story on Kalpana Chawla. I hope that storytelling will be very interesting for our participants. Thank you. Okay. Hello, everyone. How are you? Everybody is enjoying today's lectures? थोड़ा तो बोर तो नहीं हो रहे? थोड़ा okay, no problem. अभी हम आपको थोड़ा entertain कर देंगे. तो आज हम बात करने वाले हैं कल्पना चावला के बारे में. कल्पना चावला के बारे में आप सबने सुना है? She was one of the first Indian American women who has gone to the space. मेरी आवाज आ रही है आपके पास? Am I audible? Yes, you are, Neha. Yes, you are audible. Yeah, great.
ओके सो कल्पना चावला की जब हम बात करते हैं, बहुत सारी स्टोरीज आपको ऑनलाइन ही मिल जाएंगी अगर आप देखना चाहते हैं उनको। आप सब में से कोई ना कोई एस्ट्रोनॉट बनना चाहता है, नासा जाना चाहता है? So this is a very inspirational story if you want to go to NASA or become an astronaut. So Kalpana Chawla ji jo thi, she was the fourth child in the family, and she was born to Bansilal Chawla and Sanyogita Chawla ji on the 17th March in 1962. And she was the fourth child, and she was a very curious child since the childhood. So she was born in a huge family of 16 people, and she's here, the very small kid over here. She went to the Tagore School in Karnal, which is a very small school during that time. अब तो फिर भी करनाल को एक बड़ा सिटी माना जाता है, उस टाइम पे एक छोटा सा टाउन माना जाता था, और बहुत ज्यादा जैसे लड़कियों को कहा जाता था आप पढ़ लो 10th 11th 12th तक, उसके बाद आप टीचर लग जाओ और देन सेटल योर फैमिली, ये थॉट प्रोसेस थी। बट बचपन से ही कल्पना वाज अ बिट डिफरेंट। वो क्या करती थी, पुराने जमाने में छतों पे सोते हैं, तो वो भी जैसे अपने पेरेंट्स के साथ छत पे सोते थे, तो वो उनको स्टार्स दिखते थे, तो वो रोज रात को अपनी मम्मी से, पापा से, भैया से पूछती थी कि ये ऊपर क्या टिमटिमाता है। जब बहुत छोटी थी तो उन्होंने बताया कि ये तारे हैं। फिर वो कहते तारे टिमटिमाते कैसे हैं, ये अलग अलग शेप्स कैसे बनाते हैं। अब पेरेंट्स को या उनकी फैमिली के अराउंड इतनी नॉलेज नहीं थी। इट वाज 1962, उस टाइम पे मोबाइल फोन्स और इंटरनेट इतना फ्रीली अवेलेबल तो था नहीं जैसे आप लोगों के पास है आज की डेट में। तो वो ऐसे क्वेश्चन पूछती थी, अब उनके आंसर भी नहीं दे पाते थे सारे लोग, तो उनकी क्यूरियोसिटी बढ़ती गई कि लोगों को पता क्यों नहीं है इसके बारे में, मेरे को जानना है, मेरे को पढ़ना है। तो वो अपने स्कूल जाती थी, टीचर से पूछती थी। जब 10th तक गई, तो जब 11th 12th उस टाइम पे होता था, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर बोलते थे उसको, तो जब वहां पे गई तो वहां एक दिन एक टीचर उनको नल सेट्स के बारे में बता रही थी। व्हाट इज अ नल सेट, यानी कि उसके अंदर और कोई एलिमेंट है ही नहीं, इट इज एम्प्टी सेट। तो उनका मन किया कि चलो एक एग्जांपल देती हूँ इनको। टीचर ने ये बोला, जैसे कि हमारे इंडिया में एस्ट्रोनॉट, फीमेल एस्ट्रोनॉट्स एक नल सेट है, यानी कि देयर आर नो फीमेल एस्ट्रोनॉट्स। ऐसा जब उन्होंने बोला तो कल्पना चावला को लगा कि ये क्या बोल रही है। तो उन्होंने हाथ खड़ा किया, टीचर से पूछा कि टीचर अभी नल सेट है, बट आने वाले टाइम में हो ये जरूरी तो नहीं। तो उस टाइम तो टीचर को समझ नहीं आया ये क्वेश्चन क्या। उन्होंने कहा ठीक, जैसे बच्चों को बिठाने के लिए टीचर कह देते हाँ हाँ तुम ठीक बोल रहे हो, बैठ जाओ तुम, हाँ हो जाएगा, कोई ना कोई फीमेल एस्ट्रोनॉट जरूर बन जाएगी। बट उस दिन कल्पना चावला के दिमाग में, अगर आज वो जिंदा होते तो वो आज आपको खुद बताते शायद ये चीज, कि उस दिन से उनके दिमाग में अपने टीचर को ये गलत साबित करने का जनून छा गया कि नहीं, मैंने एक इंडियन फीमेल एस्ट्रोनॉट दिखाना है, किसी को तो बनाना है, चाहे मैं खुद को बनूं। तो वो मैथमेटिक्स, फिजिक्स इन सब में तो अच्छी थी ही, बट उनको पोएट्री लिखने का बहुत शौक था। तो उनकी छोटी छोटी पोएम्स, उनको रोज उनके दिमाग में कोई भी पोएम आती थी वो लिख देती थी। डांस करने का बहुत शौक था, तो वो शाम के टाइम भरतनाट्यम सीखने जाती थी। और जब उन्होंने 11th 12th कर लिया, उसके बाद उन्होंने, जैसे पेरेंट्स कहते हैं कि होम साइंस कर लो, तुम नॉर्मल साइंस के स्कूल कॉलेज में पढ़ लो, वैसा ही उनको कहा गया। तो उन्होंने 1 साल 2 साल करनाल के नॉर्मल लोकल कॉलेजेस में करके देख लिया, बट उनके दिमाग में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चलता रहा। तो वो अपने छत से हमेशा देखती थी, उनके पास एक फ्लाइंग क्लब था, तो वहां से हमेशा ग्लाइडर्स, प्लेन्स हमेशा फ्लाई करते थे। तो उन्होंने अपने पापा को कहा, पापा क्या मैं किसी दिन इस प्लेन में बैठ सकती हूँ? तो उसके पापा तो बात मानते थे, सबसे छोटी बेटी थी, 4th चाइल्ड, तो उनकी बात को मना नहीं करते थे। तो उन्होंने किसी तरह से किसी से पता करके एक दिन अरेंज कर दिया, कल्पना और उनके भैया, उनके बड़े भैया, वो दोनों को ग्लाइडर प्लेन में ले गए। तो जब ग्लाइडर प्लेन में जा रहे थे तो उन्होंने दिखाया कि ये आपका घर है करनाल में, ये आपकी सिटी है, ये सेंटर सिटी है। तो दे लैंडेड, एंड दैट डे कल्पना वाज सुपर एक्साइटेड। उसके तो पैर ही नहीं थम रहे थे, ऐसे छम 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 छम। शी वाज सो एक्साइटेड कि आई फ्लू इन द स्काई फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम। शी वाज सुपर सुपर एक्साइटेड। सो ये सारे जो छोटी छोटी चीजें थी ना, ये जब हम पीछे लुक करते हैं, उनके पेरेंट्स भी जब बचपन देखते हैं कल्पना का, तो कहते हैं कि कहीं वो सीक्रेटली उसके पास एक टारगेट था
कि वो कुछ बनना चाहती थी, एस्ट्रोनॉट बनना चाहती थी, स्पेस में जाना चाहती थी। बट उस टाइम पे हमें कभी नहीं बताया, उस टाइम पे तो उसको ये भी नहीं पता था कि उसके पेरेंट्स उसको इंजीनियरिंग करने देंगे कि नहीं। उस टाइम पे लड़कियां वर नॉट एनकरेज्ड टू डू इंजीनियरिंग ऑल्सो। मेडिकल में फिर भी भेज देते थे, जैसे हमने पहले वाले स्पीकर्स से सुना, बट इंजीनियरिंग वॉज अ वेरी डिफिकल्ट फील्ड। और उस टाइम पे मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और सिविल इंजीनियरिंग को माना जाता था इंजीनियरिंग। एरोस्पेस इंजीनियरिंग को तो वैसे ही नहीं माना जाता था, एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग को माना ही नहीं जाता उस जमाने की बात। तो तब करनाल छोड़ के वो अपनी मम्मा के साथ, पापा को नहीं लेके आई, मम्मा को साथ आई वो चंडीगढ़। इट वॉज अराउंड 4 आवर्स उस टाइम पे जो जर्नी थी करनाल और चंडीगढ़ के बीच में। एंड वहां पे शी टुक एडमिशन इन दी एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग। उन्होंने कहा मुझे इसी फील्ड में लेना है, मेरे को मैकेनिकल में नहीं लेना, मुझे इलेक्ट्रिकल में नहीं लेना, मेरे को सिविल इंजीनियरिंग में नहीं लेना। तो उनको इन तीनों में उनके प्रोफेसर ने कहा यार क्यों लेना चाहते हो एरोनॉटिकल में, लड़कियों के लिए नहीं है। फिर उन्होंने कहा नहीं मुझे तो इसी में लेना है, उन्होंने ले लिया। उसके बाद वहां पे गर्ल्स हॉस्टल भी नहीं होता था उस जमाने में, तो जैसे तैसे वो रहती रही 4 साल उनमें। शी वॉज वेरी डेडिकेटेड। जितनी भी आप स्टोरी सुनोगे ना फर्स्ट फीमेल अचीवर्स की, चाहे वो आईपीएस ऑफिसर किरण बेदी थी या कल्पना चावला है, उस टाइम में दे हैड टू बी मच अहेड ऑफ द बॉयज इन देयर क्लास एंड दे हैड टू इवन compete टू मच so as to prove they are, yes, they are good and better than the boys and being women. They were trailblazers. So उस टाइम पे जो उनका 4 साल का ड्यूरेशन था अपने एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग का, उनकी थॉट प्रोसेस बड़ी। उन्होंने देखा कि एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग के बाद क्या क्या करना होता है, क्या ऑप्शंस होते हैं। उसके बाद वो वॉलीबॉल खेलती थी, शाम को जब फुल मून नाइट होता था बाइकिंग पे निकल जाती थी अपने दोस्तों के साथ। एंड शी यूज्ड टू लव दीज काइंड ऑफ थिंग्स। एंड वन ऑफ हर फेवरेट हैबिट वाज रीडिंग। जब वो रीडिंग करती थी तो फिक्शनल स्टोरीज बहुत पढ़ती थी, रियल स्टोरीज भी बहुत पढ़ती थी। तो साइंस फिक्शन जिसके अंदर स्पेस होता है, फैंटेसी होता है, वो तो उनको बहुत ही पसंद था। तो उनमें से एक स्टोरी थी जॉनथन लिविंगस्टन सीगल की, वो उनकी वन ऑफ द फेवरेट बुक्स थी। काफी टाइम उनके हाथ में ये देखी गई है। ये एक सीगल की कहानी थी, जिसमें एक सीगल है। नॉर्मली जो सीगल्स होती हैं दे आर बर्ड्स ऑफ सी। वो नॉर्मली प्रे को कैच करती हैं सी में एंड दे कम बैक टू द शोर, दे डोंट फ्लाई वेरी फार। तो ये जॉनथन लिविंगस्टोन की जो स्टोरी थी इससे बहुत इंस्पायर्ड थी वो, क्योंकि जॉनथन लिविंगस्टोन बहुत अलग अलग तरह से फ्लाई करता था, बहुत ऊपर भी फ्लाई करता था। और एक बार वो इतना ऊपर फ्लाई किया बिकॉज ही वांटेड टू टच द हेवेंस दैट ही नेवर रिटर्न। एंड द स्टोरी ऑफ कल्पना चावला इज क्वाइट सिमिलर। सो जब उनकी पैक में एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग खत्म हुई, दैट टाइम शी डिसाइडेड कि इंडिया के अंदर ऑप्शंस नहीं है इतनी सारी उनके पास टू do higher education in aeronautical engineering. Hardly 2 or 3 colleges had it. She did not clear IIT JEE, that is why she joined Punjab Engineering College. But it didn't stop her. JEE was not the only target. उन्होंने पैक किया, पैक से उन्होंने यूएस गई, यूएस में उन्होंने फर्दर स्टडीज की, मास्टर्स डिग्री की एरोस्पेस इंजीनियरिंग में। और उस टाइम पे उन्होंने फ्लाइंग लर्न करने की भी इंडिया में कोशिश की थी। तो इंडिया के अंदर एक हाइट रिक्वायरमेंट थी कि आप कमर्शियल पायलट नहीं बन सकते बिकॉज योर हाइट वाज अ बिट लेस। तो जब वहां गई वो मास्टर्स डिग्री एरोस्पेस 1984 में गई, वहां पे उन्होंने फ्लाइंग सीखी, बट वहां पे भी उन्होंने ग्लाइडर प्लेन्स की सीखी फ्लाइंग। एंड शी वाज अ कमर्शियल, शी वाज अ लाइसेंस्ड फ्लायर ऑफ ग्लाइडर प्लेन्स एंड सी प्लेन्स। एंड वहां पे ड्यूरिंग हर मास्टर्स डिग्री she met Jean Perry Harrison, her husband, and they got married. He was a French and he was also doing the airplane training there. She continued her education, फिर उन्होंने PhD की in computational fluid dynamics, जो कि flow of air के बारे में बताता है, flow of liquids के बारे में बताता है। तो she was very expert in. And in 1991 she got the US citizenship, which is a crucial factor to get into the NASA's program. जब वो 1991 में उन्होंने अप्लाई किया, and she did not get in the very first application for NASA. जब उन्होंने NASA के लिए साइंटिस्ट एरोनॉटिकल प्रोग्राम में, she did not get. Then she again applied. She was working in the Ames lab. उन्होंने, she did not give up. 1994 में उन्होंने फिर से अप्लाई किया. There was around 2,900 applications that time, and 23 candidates were selected out of those 2,900 candidates to become astronauts. And she was one of them. And finally, in 1995, she started training to become an astronaut.
So अगर आपने कोई भी एस्ट्रोनॉट वाली बुक पढ़ी होगी अपने बचपन में या अभी पढ़ते होंगे, तो आप देखते होंगे कि कितना डिफिकल्ट ट्रेनिंग है. दे हैव टू बी अंडर वाटर, दे हैव टू लर्न टू बी हैविंग अ फ्री बॉडी काइंड ऑफ अ फीलिंग. वो करना पड़ता है ट्रेन. दे हैव टू जॉग, दे हैव टू बी फिजिकली फिट, दे हैव टू बी मेंटली अलर्ट, दे हैव टू बी मेंटली स्टेबल. They have to learn many languages because they have to interact. उनको आपस में जो उनके क्रू मेंबर्स होते हैं, वो सारे के सारे जो क्रू मेंबर्स हैं वो अलग अलग कल्चर से आते हैं. जब अलग कल्चर के लोग आते हैं तो आपको अलग लैंग्वेजेस, उनके कल्चर्स को समझना जरूरी है, क्योंकि आपको स्पेस में उन्हीं 4 या 5 लोगों के साथ टाइम लगाना है. तो इसीलिए उनको 2 साल इस ट्रेनिंग में लगे. एंड इट वाज अ वेरी हार्ड टाइम. एंड हु सपोर्टेड हर ड्यूरिंग हर चाइल्डहुड वाज हर पेरेंट्स, हर फादर एंड मदर. उस टाइम पे तो ये सिचुएशन आ गई थी जब अगस्त में एप्लीकेशंस यूएस यूनिवर्सिटीज की थी. अगस्त 28 हर फादर रिटर्न फ्रॉम द यूएस. इनके पास हाथ के अंदर एप्लीकेशन था कि मेरे को एडमिशन मिल गया है, बट पैसे पेमेंट कैसे होंगे, पापा ही नहीं आए यूएस से वापस. उस टाइम पे इतना आसान नहीं था कम्युनिकेशन. उस टाइम पे मोबाइल फोन्स नहीं होते थे. यू यूज्ड टू बुक अ टेलीफोन. वो बहुत टाइम बाद लगता था. यू हैड टू वेट इन क्यूज. इट वाज अ लॉन्ग ड्यूरेशन. तो 28 अगस्त को वापस आए और फीस पे करने की लास्ट डेट वाज 31 अगस्त. So she started crying. She had joined PEC कि मैं यहाँ पे प्रोफेसर बन जाती हूँ, कोई बात नहीं, अभी इस साल नहीं जाऊंगी, अगले साल चल जाऊंगी. इतना रोई वो उस दिन. पापा आए उनके, नाराज हो गई थी उनसे, तो वो चंडीगढ़ ही चली गई थी. उनके पापा को रिसीव करा भी नहीं उन्होंने करनाल में. एंड उनके पापा ने कहा क्यों रो रहे हो, 2 दिन है ना, मैं पापा हूँ आपका, मैं आई विल मैनेज, आई विल मेक दी पेमेंट्स, यू डोंट वरी. And you only mentally prepare yourself that you have to leave in the next 2 or 3 days. So his father, her father managed the visas, the payments of the American universities, and also packing for her in 2 days, 2 to 3 days, and she flew to the US and she joined the degree program in 1980. सो उन्होंने फिर जब नासा जब ज्वाइन कर लिया था, उन्होंने स्पेस शटल सिस्टम्स के लिए वो रिस्पॉन्सिबल थी. उस टाइम पे ये होता था कि आपको एटलीस्ट 2 चीजों में बहुत अच्छा होना है अगर आपको एस्ट्रोनॉट के लिए सिलेक्ट होना. तो वो एक तो रोबोटिक आर्म को बहुत अच्छे से शी यूज्ड टू ऑपरेट. सो रोबोटिक आर्म्स आजकल तो वी नो दे आर एआई ऑपरेटेड, वी कैन ऑपरेट. उस टाइम पे 1982 में एआई नहीं होता था, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं होता था, उसको मशीन लर्निंग कहते थे. एंड शी वाज वेरी गुड इन मशीन लर्निंग and operating the robotic arms. So लड़के जो सुन रहे हो, आपको में से किसी को पसंद है robotic arms? हाँ, कल्पना चावला को भी बहुत पसंद थी. ठीक है. और जो लड़कियां सुन रहे हो, she did 2 masters, not just in her own field, but not just in aerospace engineering, but also in computational fluid dynamics. So she was selected for the space shuttle Columbia का program, and she went through a very tough training to operate different equipments, how to repair equipments, how to operate on different people if there is some kind of a problem. You have to learn how to do surgical operations, you have to be underwater, and you have to train different languages. So there was a lot of training before the very first flight. Finally, she was the first Indian origin की women in space, and she took the STS-87 Columbia vehicle in 1997, and she conducted these experiments on microgravity effects, and she also helped in deploying the Spartan satellite. So अगर मैं 1 सेकेंड आपको एक वीडियो दिखाऊं उनका, जो उन्होंने बोला अपनी वेरी फर्स्ट फ्लाइट के टाइम, उन्होंने एक बहुत अच्छा वीडियो है जो उन्होंने बोला है. इज इट ऑडिबल, मेरे को बताइएगा. A dark sky and stars everywhere, and just last night covered with thunderstorms here and there, with some small rays of lightning, and every once in a while, city lights the clouds, and it's very much like a storybook. People do not have time to go on yet. People do not have time
So this was one of her few things that she said about during her very first trip. And then she was excited to go on her second trip to the space again. She stayed there for around 15 days during her first trip. So they stayed there for 15 days and 16 hours. So उनके पापा ने वापस आके पूछा कितने स्पीड पे जा रहे थे बच्चा आप? He said 20,000 miles per hour or more than that, Papa. I don't really remember. So she was super happy. And when she was in space, she used to look into the space. वो बाहर देखती थी, उनको सितारे दिखते थे, sun दिखता था, moon दिखता था. तो उनके दिमाग में बहुत ख्यालात आते थे कि हम अर्थ पे कहते हैं ये इंडियन है, ये यूएस है, ये हिंदू है, ये मुस्लिम है, ये क्रिश्चियन है. यहाँ पे अर्थ के बाहर स्पेस से आके देखो हम कितने छोटे हैं. वी आर सो स्मॉल. एंड कल को हम दूसरी गैलेक्सीज में जाएंगे, विल गो टू द डिफरेंट गैलेक्सीज, तो वहां हम क्या कहेंगे, हम अर्थ से हैं. हम बोलेंगे कि हम मिल्की वे गैलेक्सी से हैं. शी यूज्ड टू थिंक लाइक दैट. एंड you just feel that you are a part of the solar system and Milky Way. So when you look at the stars in the galaxy, you feel that you are not just from any particular piece of land on Earth, but from a solar system and in a larger perspective from Milky Way galaxy. तो वो ये इस तरह की thought process थी उस time पे. जब space में होते हो, it is just you and your thoughts. You don't feel your body because you are weightless. There is a lot of weightlessness. So second space flight के लिए she was all set to go. This was the 7 flight का crew for the second space mission that happened in the year 2002, if I remember right. And before going into this Columbia mission for the second time, she met her father. एंड जब स्पेस वालों को सारे 7 लोगों को एक दिन पहले, अपने टेक ऑफ से एक दिन पहले एक ही घर में रखते हैं एंड उनके सारे फैमिली वाले उनसे मिलने आते हैं. तो जब मिलने आते हैं ना फैमिली वाले, बाकी कंट्रीज से आएंगे, डिफरेंट कंट्रीज से, तो दे शुड नॉट कैरी एनी इन्फेक्शन दैट दे गिव ऑन टू द एस्ट्रोनॉट्स. तो सब पहले उनको सारे डॉक्टर्स चेक करते हैं उनके फैमिली वालों को, तभी उनको मिलने देते हैं एस्ट्रोनॉट से. तो अच्छे से चेकिंग के बाद जब कल्पना के पापा उनसे मिलने के, हार्डली उनको 5 मिनट मिले कल्पना के साथ. ज्यादा बात करने का टाइम नहीं होता, इतना हॉच पॉच होता है, एवरीथिंग इज अंडर प्रेशर लास्ट टाइम है. शी गेव अ हग टू पापा एंड ही स्टिल रिमेम्बर्स दैट हग एंड he feels ki if only he had little more time. So STS-107 space shuttle left in 2003, and while takeoff itself, they knew that there is a piece broken from the very first asbestos sheet and it has hit the carbon fiber lining of the spacecraft. And still the NASA decided to take it off. And finally, their 15 days of experiments was successful there. There was one day in that second space flight where they had to do some spray jet experiments for a scientist on Earth. Space में करना था वो experiment. And all the space astronauts are given half day off during their 15 day और half day का off देते हैं उनको. काम करने की जरूरत नहीं क्योंकि 24 hours की shifts लगती हैं उनकी लगातार. सोना भी है, काम भी करना है, तो ये आधा दिन की छुट्टी भी मिलती है उनको. तो उनको आधा दिन की छुट्टी मिली. बट कल्पना चावला डिड नॉट टेक दैट आधा दिन की छुट्टी. शी सेड कि ये जो फ्लूइड फ्लो का स्प्रे जेट का जो एक्सपेरिमेंट है जो किसी के लिए मैंने अर्थ पे करना है वो मैं करूंगी खत्म. आधा दिन की छुट्टी नहीं लेती. शी रिपेयर्ड दैट वैक्यूम पंप. उसका वैक्यूम पंप खराब था एंड शी कंप्लीटेड दैट. एंड दैट पर्सन जिनके लिए इन्होंने कंप्लीट किया उन्होंने आके एक लेटर लिखा है कल्पना चावला को. उन्होंने कल्पना चावला को तो दे नहीं पाए वो क्योंकि ड्यूरिंग द रिटर्न ऑफ दिस फ्लाइट और ये डैमेज हो गया था तो इट बर्न इनटू एशेस. सो इस तरह के एस्ट्रॉइड्स टाइप के छोटे छोटे बन के इट ब्लू अवे and all the 7 passengers they perished in sky. And वो जिनका एक्सपेरिमेंट उन्होंने एक लेटर लिखा कि मैं आपको बहुत धन्यवाद करता हूँ, आपका वो वाला एक्सपेरिमेंट हैज चेंज्ड मेनी थिंग्स ऑन अर्थ.
एंड मैं आपको पर्सनली तो नहीं थैंक कर पाया, बट मैं आज भी स्टार्स में आपको देखता हूँ एज अ गाइडिंग लाइट, एंड आई विल श्योरली कम टू यू वन डे एंड आई विल थैंक यू इन पर्सन. So this is the inspiring story of Kalpana Chawla, and she had initiated during her stay at NASA कि हर साल 2 हरियाणा के स्कूल स्टूडेंट्स आते थे नासा, दे यूज्ड टू विजिट इट. अब तो बहुत सारे नासा विजिटिंग के प्रोग्राम्स हैं, इसरो विजिटिंग के प्रोग्राम्स हैं एज ऑन डेट. आप सारे बच्चे इसरो के प्रोग्राम्स में पार्टिसिपेट कर सकते हैं. यू ऑल आर मोस्ट देन वेलकम टू पार्टिसिपेट. एंड आज की डेट में कल्पना चावला के नाम पे बहुत ऑडिटोरियम्स हैं, बहुत सारे रास्ते हैं, मेटेओराइट्स हैं, कॉमेट्स हैं, स्पेसक्राफ्ट्स हैं, इवन फंडिंग्स हैं, जो कि हम कल्पना चावला को देखते हैं कि शी वॉज एन आइकॉन, शी वॉज अ मेगा आइकॉन. And her legacy has inspired many generations of girls like me. I am also one of the biggest fans of Kalpana Chawla. 2003 में जब उनकी फ्लाइट वापस आ रही थी, we were actually looking on the screens and we were waiting to see her, but unfortunately we could not. So this is the story of the first Indian born woman in space, and her success stories has led to 2 more Indian women, that is Sunita Williams and Shrisha Bandla, who are now at NASA and they are astronauts, and they also have equally inspiring stories. And if the girls and boys out there, if you want to become an astronaut, she is one of the true inspirations, and you can go and look up the National Geographic की बहुत अच्छा डॉक्यूमेंट्री है इनके ऊपर, आप जाके उसको पढ़िए, बहुत अच्छा लगेगा आपको. उसको डबल स्पीड पे सुन लीजिए, 20 मिनट में हो जाएगा. टिकटॉक और रील्स की जगह पे आई थिंक दिस इज मच बेटर टू लुक इनटू. एंड जस्ट लाइक Jonathan Siegel, she is in the stars. And to the parents out there and teachers out there, she said in an interview, just listen to your daughters, listen to what they have to say. Make sure they have all they need to focus on their education and think differently. Thank you. Thank you very much, Dr. Sardana, for for narrating beautifully the story of inspiring journey of Kalpana Chawla, starting from her childhood activities till how she pursued her career as an astronaut. I'm sure that it will definitely motivate our young minds to take up this noble profession. And you have also given them idea how they can participate in ISRO events and all. So thank you very much again from the team. Thank you, Mayuri ji. And since you are also a graduate from IIT, I would like to request you to share a few words to those who are IIT aspirants or who want to take up engineering as a career. So okay, IIT is not that difficult. वो लगता है कि आपके लिए थोड़ा difficult है, but if you put your heart into it, don't study too much. I think 6 hours is enough. If you go to school, 6 hours is enough. In the morning is the best time for me, maybe not for you. कई लोगों को शाम का टाइम पसंद आता है, कई लोगों को सुबह. और छुट्टी वाले दिन भी सुबह सुबह पढ़ाई खत्म कर लो, फिर सारा दिन मस्ती करो. और छुट्टी को इस तरह से ऑप्टिमाइज करके मैनेज करिए. और आपके दोस्त हमेशा कहेंगे कि यार तू पढ़ती रहती है या तुम पढ़ते रहते हो, कभी खेलने नहीं आते, तो उसको सुनने का टाइम ही नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि सुबह आप पढ़ाई करो, उसके बाद आप खेलने जाओ. आप दोस्तों को ये बोल सकते हो, राइट? So IIT is not the end of it, and it is just a part of a beginning. अगर आप JEE करना चाहते हैं, it is well and good. There are many role models like Kalpana Chawla and all who have not cleared JEE, still they are doing great. So it is the passion. अगर आप एस्ट्रोनॉट बनना चाहते हो, कोई भी रूट से बन गए. अगर आप इंजीनियर बनना चाहते हो तो किसी भी रूट से बन जाओगे. आप कहीं भी पहुंचना चाहते हो, साइंटिस्ट बनना चाहते हो, किसी भी रूट से बन जाओगे. So just follow your dreams, what you want to do, and follow your heart and put your hard work. Don't listen to others. Put your hard work. That is important. Put your hard work in time. Thank you. Thank you, Dr. Sardana. Now I would like to hand over Sugandha to carry for the rest of the session. Thank you very much. Thank you so very much, Neha, for such a beautiful narration of life of Kalpana Chawla.
I too was so much captivated by this, and it shows your involvement, the kind of emotions that you brought up, the philosophical notes that you left in your talk, apart from the journey that you shared. That was really awesome. Thank you so much. And it brings us to the end of the event, and it's time to announce the winners, the moment that everybody has been waiting for. So I'll announce the quiz winners, and so we have 3 people on third prize. So they have been, let me announce, Gayatri Ghorpade, who represented D.Y. Patil School, Kolhapur. They've secured 3rd position. A big round of applause for them. Himang Solanki, who participated as individual, and from KBDAV, Senior Secondary Public School. Ashi from Om Prakash Bansal Modern School, again school representative. So this school has won 3rd prize. Many congratulations. And then we have 2nd prize, which goes to Bhumika Rathi of Birla Balika Vidyapith. So I see them applauding on the screen. Many congratulations to you. And then the first prize goes to Sayan Maiti. Sayan Maiti, who represented as individual. So we had to allow individual entries because many of the schools have shut down due to rains, which was not expected for 12th of July. So many congratulations to the winners. And regarding poster competition, there was some technical hitch that some entries which were received well in time were not evaluated, were missed out for certain reasons. So to be fair to all those entries, we need some more time, and we'll get back to you with the results. One more thing, feedback form feedback form is shared with you. Please fill it and submit it. It is necessary part of your attendance, as has been mentioned earlier. And as we conclude, it is my duty to thank one and all who are responsible for bringing out this event. I begin by thanking Chair, who led this team, and CC members who coordinated for various things. Along with that, I acknowledge INSA's support, financial support for conducting of this event, and INYAS office. Ananya, if you can wave hi. Ananya has supported as a technical staff from INYAS office. Along with that, here is my team, whom you know now. Namisha couldn't join in person because of some other prior commitment. We have Dr. Jeeban Jyoti, we have Dr. Shobna, Dr. Rishamjit, and Dr. Mayuri. All of them have put in very hard work to bring out this event. Then thanks to all the speakers, guest of honors, Professor Sudha Bhattacharya, Professor Gagandeep Kang. One of them joined us in person, the other could not because of some unavoidable reasons. Dr. Nishat Fatima, Dr. Neha Sardana, who gave really awesome talks, and I hope you all agree with me on that. So I'm very thankful to them. My thanks also goes to judges for poster evaluation as well as quiz competition. That includes INYAS alumni, Dr. V. Ram from BHU, as well as Dr. Sonu Gandhi, who helped us in evaluating number of entries that we get. We got about 200 entries for poster competition. We are so happy with such an overwhelming response that we got. And thanks to one and all for being lovely audience. We hope to see you on some other platform. If you have some suggestions, please put in feedback form and your prizes will reach to you. Please, this is a sincere request to winners that please share your contact information once again on the email ID provided in the poster, just in case a part of information is missing from the Google form that you have filled in. So thank you all. Hope you are living with a lot of enthusiasm and greater energy for pursuing science. So kudos to all who joined it. Thank you very much. Ananya, you may close the session.